हेलो दोस्तों, आज हम लेसन 4 एलिमेंट ऑफ कंपनी के लॉ में कंपनी लॉ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके CSET लीगल एप्टीट्यूड में दिया गया है। मीनिंग ऑफ कंपनी मीनिंग ऑफ कंपनी। द वर्ड कंपनी इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। जो कंपनी वर्ड है, द वर्ड इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। द वर्ड कंपनी इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। जो कंपनी है वह वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है? लैटिन वर्ड से। कम का मतलब होता है विथ और टुगेदर, और पनीर का मतलब होता है ब्रेड। And it originally referred to an association of person, originally referred to the association of person, मतलब एक ग्रुप पर्सन का, एसोसिएशन पर्सन का, who took their meals together, who took their meals together, साथ में meals खाना मतलब खाना वगैरह खाना। In the leisurely past, merchant took advantage of festival gathering to discuss business matter। साथ में बैठना, खाना वगैरह खाना और बिजनेस के बारे में डिस्कस करना, ऐसे करते थे। Nowadays, the business matter have become more complicated and cannot be discussed at length. Nowadays, business matters have become more complicated। आगे चलकर जो बिजनेस मैटर थे वो कॉम्प्लिकेटेड हो गए, तो डिस्कस करते फेस्टिवल में डिस्कस करना आसान नहीं रहा। Therefore, the word company has assumed greater importance. It denotes a joint stock enterprise in which capital is contributed by large number of people. Thus, in popular parlance, a company denotes an association of like-minded persons formed for the purpose of carrying some business undertaking. A company is a corporate body and a legal person having status and personality distinct and separate from that of the member constitute it. It is called a body corporate because the person composing it are made into one body by incorporating. It is called a body corporate। कंपनी को क्या बोला जाता है? बॉडी कॉर्पोरेट बोला जाता है, because the person compose it are made into one body by incorporating। कंपनी को क्या किया जाता है? बॉडी को क्या किया जाता है? इनकॉर्पोरेट किया जाता है। It according to the law and clothing with legal personality, वो क्या बन जाएंगी? लीगल पर्सनैलिटी बन जाएंगी। The word corporation is derived from the Latin term corpus, which means body. Latin word corpus, which means body. Accordingly, corporation is a legal person. Corporation is a legal person created by the process other than natural birth. Corporation, उसे कौन बनाता है? एक लीगल पर्सन बनाता है। उसे कौन बनाता है? कंपनी को, कॉरपोरेशन को कौन बनाता है? कॉरपोरेशन को कौन बनाएगा? एक लीगल पर्सन बनाएगा, जिसका क्या नाम हो जाएगा? आर्टिफिशियल, sometimes called legal persons, sometimes called artificial legal person। As a legal person, a corporate is capable of enjoying many of the rights
and incurring many of the liabilities of a natural person. In the legal sense, a company is an association of both natural and artificial persons incorporated under existence of law of a country. In a legal sense, a company is an association of both natural way artificial person is incorporated under the existing law of the country. In terms of the section 20 clause 20, sorry, no, in the in terms of the section 2 clause 20 of the Companies Act 2013, company means a company incorporated under this act. Company means a company incorporated under this act or under any previous company law. In common law, a company is a legal person or legal entity separate and capable of serving beyond of its member. However, an association from not-for-profit acquire a corporate life and fall within the meaning of company by reason of license under Section 8 of the Act. कोई कोई कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए भी इनकॉर्पोरेट होती है कोई कोई जो कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट होती है नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए जिसे सेक्शन 8 कंपनी के तहत बोला जाता है but a company is not merely a legal institute but a company is not merely a legal institute. It is rather a legal device for the attainment of any social, economic, and therefore a combined political, social, economic, and legal institute. But a company is not merely a legal institution. But a company is not merely a legal institution. कंपनी क्या नहीं है एक लीगल इंस्टीट्यूशन नहीं है It is rather a legal device for the attachment of any social or economic end. Therefore, a combined political, social, economic, and legal institution. Thus, the term company has been described in many ways. It is means of cooperation and organization in the conduct of enterprise. It is an intricate, centralized economic and administrative structure run by professional managers who hire कैपिटल फ्रॉम इन्वेस्टर क्या करते कैपिटल को इन्वेस्ट से हायर करते लॉर्ड जस्टिस जेम्स has to define a company as an association of many persons who contribute money or money is worth to a common stock and employ in some trade or business who share the profit and loss arising thereof. लॉर्ड जस्टिस जेम्स क्या बोलते हैं डिफाइन कंपनी एज एसोसिएशन ऑफ मेनी पर्सन कोई कोई ऐसा एसोसिएशन है पर्सन की कौन सी कंपनी क्या है एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जो कि बहुत सारे पर्सन एक साथ आके जुड़ते हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं टू कॉमन स्टॉक फिर एम्प्लॉय एट सम ट्रेड और बिजनेस फिर इसको जो ये जो पैसा है उसमें ट्रेड और बिजनेस किया जाता है और उसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको क्या किया जाता है शेयर किया जाता है मेंबर्स में द कॉमन स्टॉक द पर्सन who from it or to whom it belongs are member the proportion of capital to which each member is entitled is in his share के फॉर्म में वो डिवाइड होता है from the foregoing discuss it is clear that a company it has a company
that is own corporate and legal personality distinct separate from that member. Brief description of the various distribution given here to explain the nature and characteristics of the company as a corporate body. ये बताया गया है कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है सेपरेट पर्सन है कंपनी अलग है और मेंबर्स अलग है ये उसमें बताया जा रहा है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी मतलब कंपनी जो है वो सेपरेट है मेंबर अलग इसके जो मेंबर्स है कंपनी के जो मेंबर्स है वो अलग होंगे और कंपनी जो है वो अलग है एक में इनको मिलाया नहीं जा सकता by incorporation under the act the company is vested with a corporate personality quite distinct from individual who are its member being a separate legal entity it their own name and act under corporate name. It has a seal, it is own. कंपनी का खुद का seal होता है. It is asset are separate and distinct from those of the member. कंपनी के जो कंपनी के जो असेट है वो कंपनी के रहेंगे. वो मेंबर अपने घर के पर्सनल यूज के लिए नहीं ले जा सकता. Also, a different person from the member who compose. As such, capable of own property, incurring debt, borrowing money, having bank account, employ people, entering into contract and suing or being sued in some manner as an individual. अपने प्रॉपर्टी को यूज कर सकती है incurring डेप्ट ले सकती है borrowing money किसी से पैसा उधार ले सकती है having a bank account employ people and entering into a contract sue and being sued किसी के ऊपर केस कर सकती है. It is a member or it is owner, but they can be creditor simultaneously. As it has a separate legal entity, a shareholder cannot have liable for the act of the company even if the whole virtually entire share capital. Shareholders are not agent of the company and also cannot bind their act. Shareholder agent नहीं है कंपनी के. Company does not hold property as an agent or trustee for its member. The company does not hold its property as an agent or trustee for its member and they cannot be sued to enforce the right, nor can they be sued in respect of its liability. Incorporation is an act forming legal corporation as a juristic person. A juristic person is a law also conferring with right and obligation and dealt with in accordance with law. In other words, entity act like natural person but only through a designated person whose act a process with the amendment of law. The case of Salman versus Salomon and Company. Limited liability. Limited
लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कैसी है? लिमिटेड। जो भी मेंबर्स की जो भी लाइबिलिटी होती है कंपनी के अंदर, वो कैसी होती है? लिमिटेड होती है। जैसा कि मैंने पहले ना 100 रुपये का मेरा एक शेयर है, मेरा जो शेयर है वो 100 रुपीज़ का है, और मैंने 80 रुपीज़ दे चुके हैं। बाद में कंपनी मुझसे कितने मांगेंगी? सिर्फ 20 रुपीज़। एक्सेस नहीं मांगेंगी कंपनी मुझसे। लिमिटेड लाइबिलिटी है। परपेचुअल सक्सेशन, जो कंपनी है वो कभी मरती नहीं। कंपनी जो है वो कभी मरती नहीं। कंपनी में कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, पर कंपनी कभी भी मरती नहीं। परपेचुअल सक्सेशन है। कंपनी कैसी है? परपेचुअल सक्सेशन। Any person come and any person out, but company can forever goes into forever. Separate property, कंपनी की सेपरेट प्रॉपर्टी होती है। कंपनी की क्या होती है? सेपरेट प्रॉपर्टी होती है। मतलब कंपनी जो भी उसकी कंपनी है, जो भी कंपनी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, उसकी खुद की प्रॉपर्टी होती है। वो मेंबर की नहीं होती। मेंबर अपने पर्सनल के लिए यूज नहीं कर सकता। उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी होती है कंपनी की। ट्रांसफरिटी ऑफ शेयर, द कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइड इनटू पार्ट। कंपनी का जो कैपिटल होता है उसको डिवाइड किया जाता है, उसको बोलते हैं शेयर। इज कॉल्ड शेयर। द शेयर आर सेड टू बी मूवेबल प्रॉपर्टी आर सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। जो भी कंपनी के जो भी शेयर होते हैं, जो भी कंपनी के जो भी शेयर होते हैं, वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो भी जॉइंट स्टॉक कंपनी है, उसके जो शेयर्स रहते हैं कैसे होते हैं? फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। जैसे 1 साल हो गया, एक पर्सन है, उसने 1 साल हो गया, उसने शेयर खरीदा था। अब उसको लगता है मुझे अब तो ट्रांसफर करना है, मुझे बेचना है, तो 1 साल के बाद उसको क्या करेगा? ट्रांसफर कर देंगे। कंपनी बीइंग अ बॉडी कॉर्पोरेट and sue it is own। कंपनी क्या है? कॉर्पोरेट बॉडी है। वो अगर कंपनी के साथ कुछ गलत होता है तो क्या कर सकती है? अपने नाम से कंपनी किसी के ऊपर भी केस कर सकती है। अगर उसके कुछ नुकसान होता है कंपनी को, तो कंपनी दूसरे कंपनी के ऊपर या किसी मेंबर के ऊपर केस कर सकती है। कॉन्ट्रैक्चुअल राइट, कंपनी को किसी के भी साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का राइट होता है। कॉन्ट्रैक्ट करने का राइट होता है। Limitation of action, a company cannot go beyond the power stated in the memorandum of association. The memorandum of association of the company regulate the powers and fix the object of the company। कंपनी जो है वो
अपने पावर्स का, अपने एक्शंस का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते, अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकती। कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो भी लिखा गया है उसके तहत कंपनी को क्या किया जाता है, रन किया जाता है। कि हाँ, मुझे ये करना है, मुझे ये ऑब्जेक्ट है, मैं इस पे काम करूँगी, ऐसा कंपनी कहती है और उस पे ही वो काम करती है। उसके अलावा दूसरी इस पर वो काम नहीं करती। नॉट गो बियॉन्ड द पावर। सेपरेट मैनेजमेंट। सेपरेट मैनेजमेंट। मेंबर्स और मैनेजमेंट आर सेपरेट। जो भी कंपनी के मेंबर्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं, और मैनेजमेंट जो होता है वो अलग होता है, मतलब काम करने वाले अलग होते हैं और इन्वेस्टर्स अलग होते हैं, ऐसा बोल रहे। Voluntary association for profit. A company's voluntary association for profit is formed for the accomplishment of some public goal, and whatever profit is gained is divided among the shareholders or restored for the future expansion of the company. Only Section 8 company can form with no profit motivation. कंपनी फॉर्म हुई है, कंपनी अगर फॉर्म हुई है तो किसके मोटिव से? प्रॉफिट कमाने के लिए। किसके लिए? प्रॉफिट कमाने। हाँ, जो सेक्शन एट कंपनी है वो नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए काम करती है, नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए काम करती है। टर्मिनेशन। टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस। टर्मिनेशन। टर्मिनेशन। टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस। A company, being a abstract and artificial person, does not die a natural death. It is created by law, carry on its affair according to the law through its life. Ultimate, it enforced by law. Generally, the existence of company is terminated by means of winding up. However, to avoid winding up, sometimes company change their form by means of reorganization, reconstruction, or amalgamation. To sum up, the company's voluntary association for profit with capital divisible into transferable share with limited liability having corporate entity and common seal with perpetual succession. अगर कंपनी को बंद होना है तो कंपनी अपने आप से बंद हो सकती है। फिर वो जो भी तो वाइंडिंग अप अप बोला जाता है उसको क्या बोलते हैं? वाइंडिंग अप। जो भी प्रोसेस है उसकी वाइंडिंग अप की, जो भी प्रोसेस है वाइंडिंग अप की, उसे क्या किया जाता है? पूरा फॉलो किया जाता है। बहुत से कंपनी जो होते हैं वो ट्रांसफर जाते हैं एक एसोसिएशन में, या अमलगमेशन कर लेते हैं, ऐसा कुछ कर लेते हैं। पर अगर जिस कंपनी को बंद होना ही है, वाइंडिंग अप होना ही है, तो पूरी प्रोसेस उसको फॉलो करके उसे बंद किया जाता है। नेशनलिटी एंड रेसिडेंस ऑफ अ कंपनी। Nationality and residence of a company. It is established through the judicial decision that company cannot be citizen. कंपनी एक सिटीजन नहीं है, कंपनी एक सिटीजन नहीं है। It has nationality, domicile and residence. Held that company limited company is capable of having domicile, and its domicile is the place of registration. That domicile cling to it throughout its existence. He observed in this case. It was suggested that a body corporate has no domicile. It is quite true that a body corporate cannot have domicile in the same sense as an individual, but by analogy with natural person, the
Attribute of residence, domicile, and nationality can be given to body corporate. A joint stock company resigned where place of incorporation is the meeting of whole company. Those who represent are held and governing body meet in bodily presence for the purpose of the company and existence, exercise the power conferred upon the state by the article of association. State Trading Corporation of India. कंपनी जो भी ये कंपनी है वो सिटीजनशिप नहीं होती इसकी जो कंपनी जो होती है उसकी सिटीजनशिप नहीं होती सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं होती ये कंपनी वो क्या होती है जिस कंपनी जो भी आपकी जो भी कंपनी होती है जो उसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस होता है वही उसका वो ही उससे वो उसकी क्या होती है रेसिडेंस होती है उस कंपनी की क्या होती है वो रेसिडेंस होती है जो भी कंपनी का जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस है वो कंपनी का क्या हो जाएगा रेसिडेंस ऑफिस हो जाएगा concept of corporate personality concept of corporate personality by the provision of law a corporate cloth with distinct personality it in reality it is an association of persons who are in fact in a way the beneficial owner of a property of the body corporate the company being artificial person cannot act its own cannot through natural person जो भी कंपनी है वो क्या है कॉर्पोरेट बॉडी है जो भी जो भी कंपनी है वो क्या है कॉर्पोरेट बॉडी है जो कि एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन पर्सन से मिलजुल के बनी हुई है बहुत सारे पर्सन ने उसे बनाया हुआ है उसको मतलब बहुत सारे एसोसिएशन ऑफ पर्सन एक पर्सन बहुत सारे पर्सन उसमें एकांत हुए हैं एक अलग अलग जगह से पर्सन आए हुए एक साथ जुड़े हुए हैं और इन फैक्ट वे बेनिफिशियल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी बीइंग आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी कैसी पर्सन है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है कैन नॉट एक्ट इट इज ओन कैन ओनली एक्ट थ्रू द नेचुरल पर्सन कैन एक्ट थ्रू द नेचुरल पर्सन lifting or pursuing through the corporate will. It means a company has a separate legal entity from the person constitute its member. Indeed, it is a theory of corporate entity, a still basic principle on which whole law of the corporation based. अगर कंपनी में अगर कंपनी में कोई भी फ्रॉड होता है कोई भी कुछ गलत काम होते हैं तो उस कॉर्पोरेट बिल या उसके पर्दे को उठाया जाएगा कंपनी का जो भी पर्दा है उसको उठाया जाएगा लिफ्टिंग अप कॉर्पोरेट बिल का होता है लिफ्टिंग अप कॉर्पोरेट बिल का मतलब होता है मेंबर्स और मैनेजमेंट के बीच में जो भी एक पर्दा है उसको हटाया जाएगा और देखा जाएगा कि कंपनी के अंदर कुछ घपलेबाजी तो नहीं हो रही है उसको बोला जाता है लिफ्टिंग अप कॉर्पोरेट बिल where the corporate will has been used for commission of fraud or improper conduct. In such a situation, court lifted the will and looked at the realities of the situation. कंपनी के मेंबर जो होते हैं जो भी मैनेजमेंट है कंपनी का वो कुछ गलत तो नहीं कर रहा है कंपनी के साथ कुछ फ्रॉड तो नहीं कर रहा है but the corporate faked really on agency instrumentally एजेंसी और रियली है क्या इंस्ट्रूमेंटली
where the doctrine conflict with public policy, court lifting the carpet with protecting the public policy. जो भी पब्लिक की जो भी पॉलिसीज है, कंपनी की जो पॉलिसीज है, वो अच्छे से चल रही है, चला रहे हैं या नहीं, कंपनी में हर एक काम बरोबर हो रहा है कि नहीं. Where it was found that the sole purpose for which the company was formed was to evade taxes, the court will ignore the concept of separate entity and make the individual liable to pay the taxes the would paid but for the formation of the company. Avoidance of welfare of legislation as a common and avoidance of taxation and approach in consider problem arising out of such avoidance as necessary to be the same. I infer where it was found that sole purpose for the formation of new company was to use as a device to reduce the amount of paid by the bonus to workmen. The Supreme Court upheld the pricing of the well to look at the real transaction. अगर कंपनी कंपनी में के मेंबर्स जो होते हैं, जो कंपनी की जो मैनेजमेंट है, वो टैक्स जो होता है अपना टैक्स बचा रही है और उस टैक्स बचा के वो पर्सन क्या कर रहा है, दूसरी कंपनी खोलूंगा ऐसा सोच रहा है, जो टैक्स है कंपनी का वो नहीं दे रहा है, तो उसके साथ एक्शन लिया जाएगा. कंपनी are distinguished from other business enterprise. कंपनी company as distinct from other business enterprise. Distinct between company and partnership. Distinct between company and partnership. A company is a distinct legal person. A company is a distinct legal person. A partnership firm is not a distinct from the several person who compose it. कंपनी कैसी है, डिस्ट्रिक्ट पर्सन है, डिस्ट्रिक्ट लीगल पर्सन है, तो पार्टनरशिप फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट नहीं है. सेवरल पर्सन हु कंपोज इट. Several person who compose it. In a partnership, property of the in a partnership, the property of the firm in the property of the individual comprising it. When a company belong to the company, it is not individual comprising. पार्टनरशिप में कैसा होता है, जो भी पार्टनर्स होते हैं वो थोड़ा थोड़ा अपना प्रॉपर्टी लाते हैं, प्रॉपर्टीज लाते हैं, पर कंपनी में वैसा नहीं. वो पर्सन की नहीं होती, इंडिविजुअल पर्सन की नहीं होती, वो किसकी होती है, सिर्फ कंपनी की प्रॉपर्टी होती है. Creditors of the partnership firm are creditor of individual partners, and decree decree against firm can be executed against the partner jointly and severally. The creditors of company can proceed only against the company, not against the member. जो भी क्रेडिटर्स है कंपनी के, वो इंडिविजुअली लायबल होते हैं हर एक पार्टनर्स को, पर कंपनी में कैसा है, मेंबर्स के ऊपर लायबल नहीं होता पेमेंट के लिए. Partners are the agent of the firm, but member of the company are not its agent. पार्टनर कौन होते हैं, फर्म के एजेंट होते हैं, पर कंपनी के जो मेंबर होते हैं एजेंट नहीं होते कंपनी के. A partner can dispose of property and incur liability as long act in the course of the firm business. A member of the company and no such purpose. पार्टनर क्या कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं अपने प्रॉपर्टी को और इंकर कर सकते हैं, और इंकर इंकर कर सकते हैं क्या, अपनी लाइबिलिटीज को.
पर कंपनी में ऐसा नहीं होता. A partner cannot contract with his firm where member of a company can. पार्टनर फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता वेयर मेंबर ऑफ अ कंपनी कैन. वेयर मेंबर ऑफ द कंपनी कर सकती है. A partner cannot transfer his share and make the transferee the member of the firm without the consent of the other partner. Where company share ordinary be transfer. पार्टनर के जो शेयर्स होते हैं वो ट्रांसफर नहीं कर सकता जब तक वो सबके साथ क्या नहीं कर ले, कंसेंट ना कर ले. पर कंपनी में इजीली ट्रांसफरेबल शेयर होते हैं. Restriction on partner authority contain partnership contract to bind outsider. पार्टनरशिप पार्टनरशिप में आउटसाइडर को इंक्लूड नहीं कर सकते पर कंपनी में इंक्लूड कर सकते. पब्लिक वन एक्विजिशन themselves. Partners liability is always unlimited. वे शेयरहोल्डर में लिमिटेड इधर बाय शेयर्स और गारंटी. पार्टनरशिप में लाइबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है पर कंपनी की लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है. A company has a perpetual succession, the death or insolvency of share or all of them does not affect in the life of the company. Where the death or insolvency of partner dissolve the firm unless otherwise provided. कंपनी कैसी है? परपेचुअल सक्सेशन. मेंबर कम मेंबर गो आउट बट कंपनी में गोज टू फॉर एवर. पर पार्टनरशिप में एक भी पर्सन गया एक भी पर्सन मरा तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएंगी. A company is a legal required to have its account audited annually by chartered accountant, where the account of the firm are audited at the discretion of the partners. कंपनी में हर साल क्या होती है, ऑडिट होती है. कंपनी का ऑडिट होता है पर पार्टनर जब चाहे तब करा सकते हैं. कंपनी में अकाउंट फर्म ऑडिटेड एट द डिस्क्रेशन ऑफ द पार्टनर. पार्टनर के डिस्क्रेशन से होगा. A company being a creation of law can be dissolved, laid down by the law. कंपनी को कौन डिसॉल्व कर सकता है? लॉ. A partnership on the other hand result agreement can be dissolved at any time agreement. तो पार्टनरशिप कभी भी डिसॉल्व हो सकती है अगर पार्टनर्स ने चाहा कि हम आप कंपनी को डिसॉल्व करना चाहते हैं, पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना चाहते हैं तो फिर पार्टनरशिप कभी भी डिसॉल्व हो सकती है. A company consists of heterogeneous members. A company consists of heterogeneous members whereas are diverse members. Where Hindu undivided family consists of homogeneous and unvarying members since it consists of member of the joint family itself. कंपनी में मेंबर कहीं से भी आते हैं और ज्वाइन होते हैं पर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या होता है, फैमिली के मेंबर रहते हैं. In Hindu joint family business, the Karta manager has the sole authority to contract debt for the purpose of the business. Other co-partner cannot do so. There is no such system in a company. जॉइंट हिंदू हिंदू जॉइंट फैमिली में क्या होता है, एक पर्सन होता है जो हेड होता है वहाँ का, जिसको बोला जाता है कर्ता. वो और उसके पास सोल अथॉरिटी होती है कि कॉन्ट्रैक्ट में जा सकता है, डेप्ट खरीद सकता है. किसी से डेप्ट लेना है तो कर ले सकता है. तो कंपनी का ऐसा कुछ सिस्टम है नहीं.
A person become a member of joint Hindu family business by virtue of birth. There is no provision that effect in the company. जैसा ही जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है वो और उस वहाँ पर किसी पर्सन का जन्म होता है वो ऑटोमेटिकली उसका मेंबर बन जाएगा तो कंपनी में ऐसा कुछ है, सिस्टम है नहीं. नो रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस for gain by Hindu joint family even if the number of members exceeding 20. Registration company is compulsory. No registration compulsory. कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन नहीं है. रजिस्ट्रेशन ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के लिए कंपल्सरी नहीं है. रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी कंपल्सरी. पर कंपनी खोलना है तो रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है. Distinction between company and limited liability partnership. LLP is an alternative corporate business. LLP is an alternative corporate business form that gives the benefit of limited liability of a company and flexibility of a partnership. LLP can continue existence irrespective of changes in partner. It is capable of enter into contract and holding property its own name. LLP is a separate legal entity, is liable to the full extent of its asset but liability of partner limited in the agreed contribution in the LLP. Further, no partner is liable on account of independent or unauthorized action of other partner. No partner is liable. Partners liable नहीं होंगे independently or unauthorizedly. Individual partner are shared from joint liability. Thus, individual partner कैसे होंगे? Joint liable होंगे. Created other partner. Wrongful business, decision or misconduct. अगर कोई पर्सन है जिसने रॉन्ग किया है, जिसने रॉन्गफुली एक्ट किया है, वही पर्सन इसमें क्या हो जाएगा? लाइबल हो जाएगा. Mutual right and duties of the partner with LLP are governed by the agreement. म्यूचुअल राइट है, ड्यूटीज है, साथ में हम काम कर सकते हैं, सब कौन बोलता है? एलएलपी के तहत होता है. अग्रीमेंट with the partner between the partners and LLP as the case may be. The LLP, however, it is not relief of the liability for it is the other obligation as a separate entity. Since LLP contain the element of both a corporate structure as well as partnership firm structure, LLP is called a hybrid between the company and partnership. LLP LLP is a body corporate and legal entity. LLP is a body corporate and legal entity separate from the partners. LLP एक बॉडी कॉर्पोरेट है जो कि सेपरेट रहती है इससे पार्टनर से. Having perpetual succession, perpetual succession, LLP form a business model, organization and operate on the basis of agreement. Provide flexibility without imposing detailed legal and perpetual requirement. Procedural requirement. And I am professional, technical, expert and innovative to combine with financial risk, taking capacity in an innovation of an efficient manner. Disadvantage of corporate form of enterprises. There are, however, certain disadvantages and inconvenience in incorporation. Some of the disadvantages are
Expansion of incorporation and flotation. Incorporation of a company is coupled with complex cumbersome and detailed legal formalities and procedure involve considerable amount of time and money even after the company incorporated. कंपनी फॉर्म करने के लिए बहुत ही लीगल फॉर्मेलिटीज फॉलो करनी पड़ती है और एक्सपेंस भी बहुत लगता है. प्रोसीजर इन इन्वॉल्वमेंट कंसिडरेशन अमाउंट ऑफ टाइम एंड मनी बहुत लगता है. Various return and document are required to fill with the ROC and periodically and some of on the happening of the event. Certain books are registered or compulsory required to be maintained by the company. Approval sanction of the company board. कंपनी को अप्रूवल देना पड़ता है लॉ बोर्ड से गवर्नमेंट एंड कोर्ट से रजिस्टर कंपनी से अप्रोप्रिएट अथॉरिटी केस में भी नेसेसिटी रिक्वायर्ड ऑब्टेन सर्टेन कॉर्पोरेट एक्टिविटी कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर. Notwithstanding the elaborate the legal framework designed to ensure maximum disclosure of corporate information, members of company have restricted access with internal management and day-to-day administration of the corporate working. कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ता है हर एक इंफॉर्मेशन. Legal framework ensure the maximum disclose the corporate entity information. किसको members को day to day. Separate of control from ownership. Company अलग और members अलग. Member of a company do not have effect and limiting control. It working one have other form of business organization. Say partnership firm. The particularly sing big company in which number of member too large and exercise by any effective control day-to-day affairs. ग्रेटर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. कंपनी के अंदर बहुत सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है जो कि कंपनी को फुलफिल करना पड़ता है. ग्रेटर टैक्स बर्डन. सर्टेन केस कंपनी को कई सारे टैक्सेस भी भरने पड़ते हैं. डिटेल वाइंडिंग अप प्रोसीजर. अगर कंपनी चाहती है कि मुझे अब बंद होना है तो उसकी भी बहुत बड़ी प्रोसेस होती है. उस प्रोसेस को लीगल प्रोसेस को फॉलो करके उसे बंद किया जाता है. जर्नी. जर्नी ऑफ इंडियन कंपनी लॉ. जर्नी. The journey of Indian company law. Company law in India, as dedicated earlier, that is the child of the English parent. Our various Company Act have been modeled on the English Act following the enactment of the Joint Stock Company. 1844 in England, the first Company Act was passed in India. 1850, the first Company Act was passed in India. Curb 1850 may provide for the registration of company and transferability of share. The amendment of the 1857 conferred the right of registration without limited liability. Subsequently, right granted Banking Insurance Company Act 1860. Following similar principle in Britain, the company winding up of the Company Act 1856 repealed with all provisions of the Act that the Act provide earlier for the incorporation, regulation, and binding of the company and the association. The Act was recast 1882 imply amendment. The Indian government promulgated the Indian Companies Ordinance under which central government and the court assume extensive power to enter directly in the affair of the company and to take necessary action in the interest of the company. The ordinance was replaced by an amalgamating act of 1951.
Concept paper on company law 2004 and J. Irani report to frame the law that enable company to achieve the global competitiveness in fast changing economy to frame the law एक लॉ बनाया गया है जो कि कंपनी को है लीगल ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस मिले और चेंज हो किसमें इकोनॉमिक्स में the government had take fresh exercise for a comprehensive revision of the companies act the government had take the fresh exercise comprehensive revision of the company act 1956 फिर बाद में 1956 लाया गया albeit through the consultative process as a first step in the director's directions. Concept papers, company law drawn up in a legislative format was exposed public view on electronic media that interest party may not only express their opinion on the concept involved but may also suggest formulation of various aspects of the company law. The response to the concept of paper on company law was tremendous. Paper on companies क्या होता है tremendous था. The government therefore felt inappropriate that the proposal contained the concept paper and suggested receiving thereon put may evolve by the independent expert committee. Committee was constituted on 2 December 2004 under the chairmanship of Dr. J. Irani and Director Tata Sons with the task of advising the government on proposed revision to the Companies Act 1956. The objective to have a simplified compact law will able to address the change taking place in the national and international scenario, enable the adoptions of internationally accepted best practices, as well as provide adequate flexibility for timely evaluate new arrangement in response to the requirement of ever-changing business model. The committee submitted its report to the government on 31st May 2005. इम्पोर्टेंट कमिटीज वर्ड बताई गई रिपेयरिंग चेंजेस ऑफ द कंपनीज है जो कंपनी एक्ट को चेंजेस करेंगे 1952 में बनाया गया भाभा कमेटी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड अ कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमेटी को अपॉइंट किया गया 12 मेंबर थे इसमें रिप्रेजेंट वेरियस इंटरेस्ट अंडर चेयरमैनशिप ऑफ सी एच भाभा to the entire questions of the revision of the Company Act 1913. 1957 में शास्त्री कमेटी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड कमेटी 6 मेंबर्स की थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री ए वी विश्वनाथ शास्त्री to overcome such practical difficulties in working may be have been encountered since come into force प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आती थी कंपनी में काम करते समय working as may be encountered since into the force remove such drafting defect and ob- obsolete as may be interfere with the working of the companies. Ensure that better fulfillment of the purpose under the Act. Consider what changes from the structure of the Act, if any. Sanchar Committee. The committee was constituted by the government under the chairmanship of Sri Rajendra Sanchar to consider report what changes are necessary. Company Act 2056. 1956. With particular reference to the modifications which are required to be made in the form and structurally of the Company Act 1956 so as to simple them and to make them more effective where necessary. 1997
Chandra Rate Committee. Chandra Rate Committee was formed under the chairmanship of Dr. K.R. Chandra Rate. The main objective of the group was to rewrite the Companies Act 1956 to facilitate a healthy growth of the Indian corporate sector under liberalization, fast changing and high competitive environment. 2000 Iradi Committee was set up under the chairmanship of Sri Justice V. Balkrishna Iradi consists of experts to examine the existing law related to winding up processing of the company in order to remodel it in line with the latest development and innovation in the corporate law and governance. 2002 Joshi Committee. The company was constituted under the chairmanship of Sri R.D. Joshi to examine the remnant of the Companies Bill 1997. 2003 Naresh Chandra Committee. This committee was constituted by government under the chairmanship of Shri Naresh Chandra to regulate private company and partnership. 2005 Irani Committee. The Irani Committee was constituted under the chairmanship of Dr. J. J. Irani, of Director Tata Son, with the task of advising the government on the proposed revision to the Companies Act 1956. 2005 Vesh Committee. The Government of India appointed a committee under the chairmanship of O.P. Vesh to streamline the prosecution mechanism under the Companies Act 1956 to make it more effective. Companies Bill 2012 Companies Bill. The government considered the recommendation of Irani Committee. The government considered the recommendation of Irani Committee and also had detailed discussion and liberalization with various stakeholder industry chambers. The government considered the recommendation of Irani Committee. गवर्नमेंट के रिकमेंडेड के लिए ईरानी कमेटी has also had detailed discussion. किस पे डिस्कशन हुआ? डिस्कशन लिबरलाइजेशन विद वेरियस स्टेकहोल्डर. लिबरलाइजेशन पे हुआ. This industry chamber, professional industry institution, government department, legal expert and professional etc. Thereafter, the Companies Bill 2009 was introduced in the Lok Sabha on 3rd August 2009. The bill greater emphasis on self-regulations and minimization of regulatory approval in managing of the company. कंपनी एक्ट 2013 द कंपनी बिल 2012 फाइनली बिकम द कंपनी एक्ट 2013 द कंपनी बिल 2012 फाइनली बिकम द कंपनी एक्ट 2013 we receive the asset of the president on August 29, 2013.
29 August 2013 and was notified in the Gazette of India 30th August 2013. Company Act 2013 has undergone various amendments aimed at enhancing efficiency and promoting ease of doing business. The act was also amended by the Insolvency and Bankruptcy Code 2016. The act was the the act the act was also amended insolvency. The act was also amended by the Insolvency and Bankruptcy Code 2016 and Finance Act 2017. The Insolvency and Bankruptcy Code 2016 led omission of various sectors Section 253 to Section 269, Section 289, Section 304 and Section 232, 323 and Section 325. The Companies Act 2019 and Company Amendment Act 2020 discriminate Company Act 2013 signifies the contributes so far. Military has come out several secular notification order, various amendment rules to facilitate better and smooth implementation of the act. The Company Act 2013 introduced the new concept supporting enhanced disclosure, accountability, better board governance, better facilitate of business, and so on. It includes associate company, one-person company, small company, dormant company, independent director, woman director, resident director, special courts, secretarial, standard, secretarial audit, class of action, registered values, rotation of auditor, vigil mechanism, corporate social responsibility, e-voting. Applicability of Companies Act 2013 किस किस के ऊपर कंपनी एक्ट 2013 अप्लाई होगा Applicability of Companies Act 2013 According to Section 1 of the Companies Act 2013, the Act extends to the whole of India. Provision Act apply to the following. कंपनी एक्ट 2013 किसका अप्लाई होगा पूरे भारत में अप्लाई होगा कंपनी एक्ट 2013 किस पर अप्लाई होगा पूरे भारत में अप्लाई होगा द कंपनी इज इनकॉर्पोरेट अंडर द एक्ट अंडर एनी प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट इनकॉर्पोरेटेड जो भी कंपनी इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट जो 2013 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है और इससे प्रीवियस लॉ में इनकॉर्पोरेट हुई है insurance company except such provision are inconsistent with provision of the Insurance Act 1938 Insurance Regulatory and Development Authority Act इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर अप्लाई नहीं होगा banking companies except so far solid provision inconsistent with provision of the Banking Regulation Act 1949 company engaged in generation or supply of electricity except so far said provision are inconsistent with the provision of the Electricity Act 2003. Company Act 2013 is not applicable to unincorporated company. जो incorporate नहीं है कंपनी उसके अप्लाई नहीं होगा इन types types of companies types types of companies company may be classified on the basis of their incorporation company किसके basis पर classify किया गया है incorporation number of members size basis of
control, and motive. On the basis of incorporation of company, it may be classified into charter company, statutory company, and registered company. On the basis of liability, it may be company limited by shares and guarantee, and unlimited liability companies. Further, on the basis of number of members, they may be classified into one person company, private company, and public company. The basis of control, they may be classified into holding company, subsidiary company, and associate company. Foreign company, holding subsidiary company, investment company, producer company. टाइप दिया है कंपनी के टाइप्स ऑफ कंपनी में. The Company Act 2013 provide for the kind of company that can be promoted and registered under the Act. The three basic type of company which may be registered under Act are private, public, and one person company. प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी? प्राइवेट कंपनी देखेंगे. Private company means a company having minimum paid up share capital as may be prescribed and which may be its article. प्राइवेट कंपनी का मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल जो भी उन्होंने प्रेस्क्राइब करके रखा है उसके तहत वो प्राइवेट कंपनी बनेगी. रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर. शेयर ट्रांसफर नहीं करते फ्रीली, शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते प्राइवेट कंपनी वाली. एक्सेप्ट in case of one person company, limit the number of members to 100. Except in case of one person company, limit the number of its member to 200. 200 member, 200 member ही चाहिए किसके लिए? वन पर्सन कंपनी के लिए. ये लिमिट दी है, इसके एक्स्ट्रा नहीं हो सकते. इससे ज़्यादा 200 से ज़्यादा नहीं हो सकते वन पर्सन कंपनी के अंदर. Provide that where two or more persons hold one or more share in a company jointly, Isha, for the purpose of this clause, is treated as a single member. कोई पर्सन है दो और दो से ज़्यादा दो तीन शेयर खरीदे जॉइंटली तब भी और जॉइंटली शेयर भी सिंगल शेयर के रूप में माना जाएगा, एक ही शेयर माना जाएगा. Provide further that person who are in the employment of the company, वो एम्प्लॉय है कंपनी का. Person who have been formerly in employment of the company were member of the company were in that employment and have continued to be member after the employment cease shall not be included in the member of the number of member. Prohibit any invitation to the public to subscribe for any securities of the company. कोई बाहर का मेंबर आके सिक्योरिटीज नहीं खरीद सकता, शेयर्स नहीं खरीद सकता. पब्लिक कंपनी देखेंगे कौन सी कंपनी? पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी. ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है. हैज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब. Provide that
a company which is subsidiary of a company. Provide that a company which is subsidiary of a company, not being a private company. वो एक प्राइवेट कंपनी है ये सब्सिडरी कंपनी हो सकती है shall be deemed to be public company for the purpose of the act even where a subsidiary company continue to be private company and it is article one person company one person company means a company which has only one person as a member. Company with charitable object. Company with charitable object. A person or an association of person registered and licensed under Section 8 of the Companies Act 2013 as a limited company. सेक्शन 8 कंपनी कौन सी कंपनी है चैरिटेबल कंपनी has in its object the promotion of commerce, art, science, sport, education, research, social welfare, religion, charity, protection of environment, or any such other object, as it is object. ऐसी कंपनी जो सिर्फ चैरिटी के लिए खुली है सोशल वेलफेयर के लिए खुली है उसको सेक्शन 8 कंपनी बोला जाता है और चैरिटेबल कंपनी बोला जाता है intend to apply its profit intend the intent to apply its profit if any or other income is promoting object and intend to prohibit the payment of any dividend to its member को डिविडेंड नहीं मिलता उस कंपनी में चैरिटेबल कंपनी गवर्नमेंट कंपनी Government company means any company in which not less than 51% of the paid-up share capital is held by the central government or by any state government or government or party by the central government and partly by one or more state government and include a company which a subsidiary company of such a government company. ऐसी कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 51% या उससे ज़्यादा होल्ड किया है ऐसी कंपनी को क्या बोलेंगे गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे फॉरेन कंपनी एनी कंपनी और बॉडी कारपोरेट इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया विच हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया whether by itself or through an agent physically or through electronic mode conduct any business activity in India in any other manner तो ये फॉरेन की कंपनी है जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो फॉरेन में पर वो क्या कर रही है यहाँ पे इंडिया में आके अपना बिजनेस कर रही है इंडिया में आके क्या कर रही है अपना बिजनेस कर रही है ऐसे को फॉरेन कंपनी बोला जाएगा एसोसिएट कंपनी कौन सी कंपनी एसोसिएट कंपनी एसोसिएशन associate company is a relation to another company associate company is a relation with another company means a company in which that other company has a significant influence but which is not a subsidiary company of the company having such influence and include a joint venture company एसोसिएट कंपनी है वो जॉइंट वेंचर के तरह काम करती है जॉइंटली काम करती है एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती है ये कंपनी होल्डिंग कंपनी
Holding company in relation to one or more other company means a company of which such company are subsidiary company. It may be noted that company include anybody corporate. होल्डिंग कंपनी का मतलब होता है ए कंपनी है और बी कंपनी। ए कंपनी के शेयर बी ने होल्ड किए। ये कौन सी कंपनी? ये होल्डिंग कंपनी। और ये कौन सी कंपनी? ये सब्सिडियरी कंपनी। सब्सिडियरी कंपनी। Subsidiary company, a company in relation to any other company, that is to say, the holding company, means a company in which a holding company control the composition of board of director, control the composition of the board of director, exercise or control more than one half of the total voting power, either its own or together. Provided such class or class of holding company, it may be prescribed that shall not have any layer subsidiary beyond such it may be prescribed. Small company. A small company means a company other than public company. Small company means a company ऐसी कंपनी जो अलग है किससे? पब्लिक कंपनी से। Paid up share capital of which does not excess 50 lakh or such higher amount as may be prescribed, which shall not more than 10 crore rupees. इसका जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 50 लाख रुपीज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। as may be prescribed, which shall not more than 10 crore rupees, shall not more than 10 crore rupees. Turnover of which as a per profit and loss account for the immediately preceding financial year does not exceed 2 crore rupees. इसका जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। अमाउंट एज मे बी प्रेस्क्राइब shall not be more than 100 crore rupees. और इससे भी ज़्यादा not more but more than shall not be more than 100 crore rupees। इससे भी ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए। हायर अमाउंट में भी इससे भी ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए। Provided holding in this clause shall apply to a holding company or subsidiary company, holding company or subsidiary company apply होंगे। A company registered under section 8 company, a company or body corporate govern or in special act। ये जो भी है, ये जितने भी कंपनी दी गई है ये कंपनी में ये अप्लीकेबल नहीं होगा। ये जो क्लॉज है ये क्लॉज अप्लीकेबल नहीं होगा। Dormant company, where company is a form and registered for further project or hold on assigned or intellectual property as a no significant accounting transaction. Such a company or an active company make an application to the register or obtaining status of a dormant company। ऐसी कंपनी जो स्लीपिंग कंपनी
डोरमेंट कंपनी को ही स्लीपिंग कंपनी बोला जाता है। ऐसी कंपनी जो कि प्रोजेक्ट तो अभी चालू होने का है, पर हमने कंपनी को क्या कर दिया, रजिस्टर्ड कर दिया है। हमने जो कंपनी है उसको हमने रजिस्टर कर दिया एज ए कंपनी कह के। बाद में हम उसका प्रोजेक्ट चालू करेंगे। बाद में हम इसका प्रोजेक्ट चालू करेंगे। इनएक्टिव कंपनी अभी एक्टिव नहीं है, काम नहीं कर रही है, बस रजिस्ट्रेशन करके रख दिया है, इसको इनएक्टिव कंपनी बोला जाता है। इन केस ऑफ कंपनी विच हैज नॉट फुलफिल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न, ऐसी कंपनी क्या करती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी फाइल नहीं करती और एनुअल रिटर्न भी फाइल नहीं करती। टू फाइनेंशियल ईयर कंसेक्यूटिव ईयरली। In case of company which has not filed financial statement or annual return for two financial year consecutively, the registrar shall issue the notice that a company and enter the name of the such company in registered maintain for dormant company। ऐसी कंपनी जिसने 2 साल से लगातार 2 साल से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइल नहीं किया, एनुअल रिटर्न को भी फाइल नहीं किया, ऐसे कंपनी को कम सरकार डोरमेंट कंपनी के तहत लिस्ट में डालती है। A dormant company which has minimum number of 3 director in case of public company, 2 director in case of private company, and 1 director in case of one-person company. Register shall strike off the name of dormant company from the register of dormant company which has failed to comply with the requirement. निधि कंपनी। Nidhi means a company which has incorporated as a Nidhi the name object of the cultivating the habit of thrift saving among the members, receiving deposit from and lending to its member only for the mutual benefit and comply with such rules are prescribed by the central government for regulation of such class of company। निधि कंपनी एक बैंक की तरह ही काम करती है। इसके जो मेंबर्स होते हैं इस उनसे ये पैसा जमा करवाती है और उनको बाद में उन अपने ही मेंबर्स को लोन भी देती है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। प्रोड्यूसर कंपनी। प्रोड्यूसर कंपनी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 378A क्लॉज 1 of the Company Act 2013, producer company means a body corporate having object or activity specific in the section 378B and registered as a producer company under Company Act 2013 under the Company Act 1956 in terms of section 378B clause 1 of the Company Act 2013, the object of the producer company shall related to all any of the following matters, namely production, बताएगा production, harvesting, procurement, grading, pooling, handling, marketing, selling, export of primary produce of the member, import of the goods and service for their benefit, provided that the producer company may be carry on any of the activities specified in clause either by itself or through other institution. Process processing include preserving, drying, distilling, brewing, wheatening, canning, and packaging of produce of its member. Manufacture, sales of supply of machinery, equipment, con- consumable, mainly to its member.
providing education on mutual assistance principle to its members and others, generation, transmission, and distribution of power, reve- uh, revitalization of land and water resource, their use, conservation, and communication relation to the primary produce, insurance of producers or their primary produce, promoting technique of mutually and mutual assistance, welfare measures or facility for the benefit of member as may be decided by the board. Any other activity initially or incidentally to any of the activity refer to its class A to I or other activity which may be promote to the principle of mutually and mutual assistance among the member in any manner. Financing or procurement, processing, marketing or other activity specified in clause A to J, which include extending of credit facility or any other financial service to its member. क्रेडिट फैसिलिटी भी देता है प्रोड्यूसर कंपनी. नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ये एक बैंक नहीं है, एक कंपनी है जो कि बैंक की तरह ही काम करती है, जो कि एक बैंक की तरह ही काम करती है. A non-banking financial company is a company registered under the Companies Act, engaged in the business of loan and advance, acquisition of shares, stock, bond, debenture, security issued by government or local authority, other marketplace of like nature. ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो कंपनी से जो कि बिजनेस में हेल्प करती है. किसमें हेल्प करती है? बिजनेस में. जैसे कि लोन हो गया, एडवांसेस हो गया, एक्विजिशंस, शेयर्स अगले हो गए, शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, एक्विजिशन करना, बॉन्ड को, स्टॉक्स को, शेयर्स को, डिवेंचर को, सिक्योरिटीज को इशू करना गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज के लिए. मार्केट प्लेस सिक्योरिटीज लाइक नेचर, लीज, हायर, परचेज भी करना. इंश्योरेंस बिजनेस करना, चीट बिजनेस बट डज नॉट इंक्लूड एन इंस्टीट्यूशन whose principal business is that of agriculture activity, industrial activity, purchase, sales of any goods other than securities, or providing any service and sales of purchase, construction of immovable property. A non-banking institution, which is a company, has the principal business of receiving deposit under any scheme or arrangement in one lump sum or in installment by way of constitution or any other manner, is also a non-banking financial company. Formation of company. Formation of company. According to Company Act 2013, a company may be formed any other lawful purpose. कंपनी फॉर्म करना है पर किसके लिए? एक लॉफुल पर्पस के लिए.
Seven or more person were company to be formed a public company. सात और सात से ज्यादा पर्सन होना किसके लिए पब्लिक कंपनी फॉर्म के लिए. टू और मोर पर्सन वे कंपनीज फॉर्म प्राइवेट कंपनी दो और दो से ज्यादा प्राइवेट कंपनी के लिए. वन पर्सन हु इज द कंपनी फॉर्म वन पर्सन कंपनी टू से अ प्राइवेट कंपनी. एक ही पर्सन चाहिए सिंगल पर्सन किसके लिए वन पर्सन कंपनी के लिए. A company form above may be either a company limited by shares, limited by guarantee, unlimited company. Me either. Company limited by share means a company having liability of member limited by the memorandum to the amount, if any unpaid on the shares respective held by them. कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स का मतलब होता है कि 10 रुपए का शेयर है उसने 7 रुपए दे दिए तो कंपनी है उसको 3 रुपए ही मांगेगी. उससे ज़्यादा अमाउंट नहीं मांगेंगे. सिर्फ 3 रुपए मांगेंगे. Company limited by guarantee means a company having liability of its member limited by the memorandum to such amount as a member may respectively undertake contribution to the asset of the company in the event of being wound up. कंपनी इस इसमें जो एक मेंबर है इसने शेयर्स तो खरीदे और उसके शेयर्स की अमाउंट जो है पूरी समाप्त हो गई पर भी उसको लायबल होगा. अगर कंपनी को ज़रूरत है पैसों की तो इस मेंबर को उसे पैसा देना पड़ेगा उसके ऊपर कहेंगे लायबिलिटी आएंगी. अनलिमिटेड कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग एनी लिमिट लायबिलिटी ऑफ इट मेंबर नॉट हैविंग एनी लायबिलिटी. कितना भी पैसा लगे उसको मेंबर्स को चुकाना पड़ता है. शेयर कैपिटल द टर्म कैपिटल हैज वैरायटी ऑफ मीनिंग. कैपिटल के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं. It may means one thing to an economist, another to an accountant, while another to a businessman or lawyer. A lawyer view, a lawyer के a layman, a layman view capital as the money, capital as the money. layman के हिसाब से capital क्या है? money. Which company has raised issue of share? कंपनी हैज इशू ऑफ शेयर. कंपनी क्या करती है शेयर को इशू करती है. इट uses this money to meet its requirement by way of acquiring business premises and stock in trade, which are called fixed capital and other the circulating capital respectively. Share is a share in the share capital of the company and include stock except where a distinction between stock and share is expressed or implied. Share capital refer to the fund that a company raised in exchange for issuing on ownership interest in the company in the form of share. Share capital may also describe the numbers and type of share that compose the company share structure. कंपनी को डिस्क्राइब करना पड़ता है कि कंपनी का कौन सा शेयर्स है, टाइप्स क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स है या इक्विटी शेयर्स है, उसकी अमाउंट क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, वो सब कुछ डिस्क्राइब करना पड़ता है कंपनी. In company law, capital is the share capital of company which classified as nominal, authorized, registered capital.
Such a capital is authorized by memorandum of a company to be maximum amount of share capital of the company. Such a capital as is authorized by the memorandum of a company to be maximum amount of share capital of the company. मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहता है कि आप शेयर्स कितने इशू कर सकते हैं. Issued capital. Such capital as a company issue from time to time for subscription is it is that part of the authorized or nominal capital which the company issue for the time being for public subscription and allotment. This is computed at the face or nominal value. Subscribe capital, such part of the capital which for the time being subscribed by the member of company, that is portion issue capital at face value. कंपनी कभी भी शेयर इशू करती है तो उसकी कौन से वैल्यू पर करती है, फेस वैल्यू पे, विच हैज़ बीन सब्सक्राइब फॉर taken up by subscriber of shares in the company. It is clear that the entire issue capital may or may not be subscribed. जब कंपनी शेयर को इशू करती है उसके फेस वैल्यू पर ही करती है, उसके किसको वैल्यू पर, फेस वैल्यू पर. कॉल्ड अप कैपिटल. Such part of capital which has been called for payment. It is that portion of the subscribed capital which has been called or deemed share by the company. कोई पर्सन है जिसने शेयर्स खरीदा है, ठीक है, और उसका कंपनी को जो पेमेंट बचा है तो कंपनी उसको फ़ोन लगाएंगी पैसा वापस लेने के लिए, पैसा भेजने के लिए, तो उसको कॉल्ड अप कैपिटल बोलते हैं. पेड अप शेयर कैपिटल. पेड अप शेयर कैपिटल. Such aggregate amount of money created as a paid up as is equivalent to the amount received as a paid up in respect of share issue and also include any amount credited as a paid up is respect of shares of the company but does not include any other amount received in respect of such shares by whatever name called. ऐसा शेयर जिसने शेयर खरीदा, उसने क्या किया, शेयर को खरीदा और शेयर का पैसा जो है कंपनी में आया, तो उसको पेड अप, और मैंने क्या किया, उसको पे किया, पैसा क्या किया, पे किया, तो उसको पेड अप शेयर कैपिटल बोला जाता है. इक्विटी शेयर कैपिटल. इक्विटी शेयर कैपिटल. Equity share capital with reference to any company limited by share means all share capital is not preference share capital. Preference share capital with reference to any company limited by share means is a part of issue share capital of company which will carry a preferential right with respect to payment of dividend either as a fixed amount or amount calculated at a fixed rate which may be either free of subject to the income tax repayment in case of winding up repayment of capital of the amount of the share capital paid deemed to have been paid up whether or not
There is a preferential right to the payment of any fixed premium or premium on any fixed scale specified in the memorandum or article of association. Equity share capital और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर जो होते हैं वो लंबे समय तक चलते हैं और प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं वो भी लंबे समय तक चलते हैं पर इनको स्पेशल राइट दिए गए कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए हैं इनका जो भी पेमेंट होता है प्रेफरेंस शेयर्स वालों को क्या होता है कि पहला प्रेफरेंस शेयर्स वालों को जाता है अगर जिस टाइम कंपनी बंद होती है तो जो भी पेमेंट है तो पहले सबसे पहले किसको मिलेगा प्रेफरेंस शेयर्स को मिलेंगे जब भी कंपनी में डिविडेंड या इंटरेस्ट वगैरह अनाउंस होता है डिविडेंड मिलता है कंपनी को शेयर होल्डर्स को तो पहले कौन को मिलेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेंगे डिविडेंड वगैरह बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स द कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एंड मैनेज बाय द ह्यूमन बीइंग कंपनी कैसी कंपनी है एक आर्टिफिशियल कंपनी है और उसको मैनेज कौन करता है ह्यूमन बीइंग द कंपनी हु रन इट आर नोन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको रन कौन करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डायरेक्टर acting collectively are known as board. The director play a very important role in the day-to-day function of the company, and it is a board who is responsible for the company overall performance. Appointment of director, directors का appointment. Section 152 of the Company Act 2013 provide that where there is no provision made in Article of Association of the company for appointment of the first director then subscriber to the memorandum. सेक्शन 152 सेक्शन 152 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 के तहत ऐसी कोई भी प्रोविजन नहीं लिखी गई है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो कि फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अपॉइंट करने के लिए सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम who are who are individuals shall be deemed to be first director of the company who are individuals shall be deemed to the first director of the company कोई भी इंडिविजुअल आके मेंबर जो भी होगा उसका जो भी फर्स्ट वो क्या कर सकता है डायरेक्टर बन सकता है अपनी कंपनी का until the director are duly appointed by the member कोई भी इंडिविजुअल आके फर्स्ट डायरेक्टर बन सकता है किसका कंपनी का जब तक उसे मेंबर्स ने कोई ऐसे कंपनी के मेंबर जो होते हैं वो डायरेक्टर्स को अपॉइंट नहीं कर सकते तब तक एवरी डायरेक्टर शॉल बी अपॉइंटेड बाय कंपनी इन ए जनरल मीटिंग हर एक डायरेक्टर जनरल मीटिंग में अपॉइंट होते हैं डायरेक्टर कब अपॉइंट होते हैं जनरल मीटिंग A person shall not be appointed as a director of a company unless has been allotted director identification number or any other number जब तक पर्सन को डी नंबर नहीं मिल जाता डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर जब तक पर्सन को नहीं मिल सकता तब तक वो कोई भी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता every person proposed to be appointed as a director by the company in a general meeting otherwise shall furnish a director identification number every person proposed to be appointed as a director by the company in a general meeting otherwise shall furnish the director identification number
Such a number may be prescribed and declaration that is not disqualified or become a director under the act. A person, a person appointed, a person appointed as a director shall not act as a director unless he give his consent to the hold office as a director. Such consent has been filed with the registered with the 30 days of his appointment. Unless the article provide for the retirement of all director at every annual general meeting. हर एक एनुअल जनरल मीटिंग में नॉट रिटायर होते हैं डायरेक्टर नॉट लेस देन टू थर्ड ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर दो टू थर्ड से कम डायरेक्टर्स रिटायर नहीं होते पब्लिक कंपनी में the person whose period of office is liable to determination by retirement of director by rotation, save as otherwise expressly provided in the Act, be appointed by the company in general meeting. The remaining director in case of any such company shall default of subject to any regulation in the article of association may be appointed by the company in a general meeting. The first annual general meeting of public company held in next after date of general meeting at which first director appointed in accordance with the clause A and B and at every subsequent annual general meeting. One third of such director for the time being liable to retire by rotation or such number was neither or nor multiple of three then the number nearest to or one third shall be retired from office. Removal of director कंपनी का डायरेक्टर्स का छटनी डायरेक्टर्स को निकालना कंपनी में by ordinary resolution remove a director not being a director appointed by the National Company Law Tribunal before expiry of the period of his office after giving him reasonable opportunity of being heard. Independent director reappointed for second term shall be removed by the company. Independent director reappoint हो सकते हैं for the second term shall be removed by the company. Second term में remove कर दिया जाएगा company से. Only by passing a special resolution and after giving him reasonable opportunity of being heard. Special notice shall be required of any resolution to remove the director under this section. स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा ना कंपनी को जो कि डायरेक्टर को रिमूव करने से or to appoint somebody in place of director also removed at the meeting at which he is removed. A vacancy created by the remove of the director may, if he had been appointed by the company in general meeting or by vote, be filled by the appointment of another director in his place at the meeting at which he is removed. A director so appointed shall hold office till the date up to which his predecessor would have held office and not been removed. मीटिंग ऑफ द बोर्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है मीटिंग ऑफ द बोर्ड मीटिंग ऑफ द बोर्ड आर सिग्निफाई इन द लाइट ऑफ रनिंग ऑफ द कंपनी मोर efficiently and effectively. कंपनी 2013 mandate the company to hold a minimal number of meetings of the board for proper functioning. 2013 के तहत कंपनी 2013 के तहत
मिनिमम नंबर ऑफ मीटिंग, मिनिमल लिखा है, मिनिमम होगा। मीटिंग फॉर बोर्ड, बोर्ड मीटिंग लेनी पड़ती है कंपनी को। बोर्ड कंपनी को क्या करना पड़ता है, बोर्ड मीटिंग लेना पड़ता है, जो कि कंपनी जो है प्रॉपर फंक्शनिंग से चल रही है, यानी बोर्ड मीटिंग क्रूशियल फॉर द कंपनी। बोर्ड मीटिंग कैसे है, क्रूशियल है किसके लिए, कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट है। कंबाइन डेवलपमेंट एज अ बिकॉज ऑफ द रीजन इन फॉर्मल मीटिंग are held to devise policy, derive the management strategy, and evaluate the exception of the stakeholder. Company Act provide that the first board meeting should have within 30 days of the date of incorporation. ठीक है, पहले बोर्ड मीटिंग, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कब होनी चाहिए, 30 days डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, विद इन 30 days के अंदर। Thereafter there shall be minimum 4 board meeting every year, not more than 120 days invention between two consecutive board meetings. In case of OPC, should company dormant company, at least one board meeting should be conducted in each half of the calendar year. साल में 2 बार तभी होना चाहिए। Gap between two meetings should not less than 90 days. 90 days का गैप नहीं होना चाहिए दो मीटिंग के बीच में। This provision not apply to one person company in which there only one director. Board of Directors Section 8 company shall hold at least one meeting within 6 calendar years. Shareholder meeting. A meeting may be generally shareholder meeting. A meeting may be generally defined as a gathering or assembly, a getting together of number of persons for transacting any lawful business. There must be at least 2 persons to consecutive a meeting. Therefore, one shareholder usually cannot constitute a company meeting even if hold proxy for other shareholders. However, in certain exceptional circumstances, even one person may be constitute one a meeting. It's to be noted that every gathering or assembly does not constitute a meeting. Company meeting must be convenient and held in perfect compliance with various provisions of the Company Act 2013. Rules frame thereunder. A general meeting, a meeting of the member of the company. Decision-making power of a company are vested a member and their directors. They exercise their respective powers through the resolution passed by them. General meeting of the member provide a platform to express in their regard to the management of their affair of the company. Annual general meeting is an important annual event where members get an opportunity to discuss activity of the company. Convening of such meeting every year is compulsory. Annual general meeting should be held once in each calendar year. Subsequent annual general meeting of company should be held within 6 months from the date of closing of the relevant financial year. The gap between two annual general meetings shall not exceeding 15 months. शेयर होल्डर मीटिंग होती है, कंपनी शेयर होल्डर्स को बुलाती है, उनकी मीटिंग लेती है। शेयर होल्डर्स मीटिंग में एनुअल जनरल मीटिंग्स भी होते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग कंपनी को साल में एक बार करना होता है, जिसका गैप 15 एक जनरल मीटिंग से दूसरे जनरल मीटिंग का जो भी गैप है वो 15 महीने का नहीं होना चाहिए। शेयर होल्डर एनुअल जनरल मीटिंग में वोट करते हैं, अपना डिसीजन देते हैं, उस पर कंपनी भी डिसीजन लेती है। वोटिंग पावर्स, वोट का अधिकार होता है जनरल मीटिंग में मेंबर्स को। एन एनुअल जनरल मीटिंग कैन बी कॉल्ड बिजनेस आवर्स
एनुअल जनरल मीटिंग कब लेना चाहिए? बिजनेस आवर्स में लेते हैं, दैट इज बिटवीन 9 टू 6 p.m. On one day that is not a national holiday, national holiday के दिन नहीं ले सकते. It should be held either at a registered office of the company or at the same place within the city, town, village in which registered office of the company. एक तो कंपनी को अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में लेना चाहिए, या कंपनी का जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस है उसी प्लेस के अंदर, उसी सिटी के अंदर, टाउन हो गया, गांव हो गया, विलेज हो गया, जो भी है उसके अंदर लेना चाहिए. Is situated. However, annual general meeting of an unlisted company may be held at any place in India. जो भी कंपनी अनलिस्टेड है, जो भी कंपनी यहाँ पे लिस्ट नहीं है, वो कहाँ पर भी कंपनी अपनी मीटिंग ले सकती है. If consent is given in writing by electronic mode by all the member in advance, the central government is empowered to exempt any company from this provision subject to such condition as may be imposed. According to Section 1022A, in case of annual general meeting, all business to be transacted treated shall be deemed special other than consideration of financial statement and other report of the board of director and auditor, declaration of any dividend, appointment of director in the place of those retiring, appointment of fixing of remuneration of the auditor. Further, Section 10, Clause 2, Subclause B, provide that in case of any other meeting, all business shall be deemed to be special. Section 99 of the Company Act provide that if any defend is made in complying or hold a meeting of the company and every officer of the company who is a default shall be punishable. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कॉर्पोरेशन के तहत, उसको फॉलो करना पड़ता है सोसाइटी के लिए. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 135 क्लॉज 1 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, एवरी कंपनी हैविंग नेट वर्थ ऑफ द रुपीज 500 करोड़ और मोर, a turnover of the rupees 1000 crore or more, or a net profit of rupees 5 crore or more during the immediately preceding financial year shall be constituted a corporate social responsibility committee of the board consists of the three or more directors, out of which at least one director shall be an independent director. At least one director shall be an independent director. However, where a company is not required to appoint independent director under section 149 4 shall have corporate social responsibility committee two or more directors. The board report should disclose the composition of the corporate social responsibility committee. The corporate social responsibility committee shall formulate and recommend to the board a corporate social responsibility policy which shall indicate the activity undertaken by the company area subject specify schedule 7. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कुछ सोशल काम करना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कंपनी की, जो कि सोसाइटी के लिए कुछ न कुछ करे. Yes, the company shall give preference to the local area around where they operate for the spending amount uh, earmarked for corporate social responsibility. If a company fails to spend such amount, the board shall report specifically the reason for not spending the amount and use unless unsuspect amount related to any ongoing project. Refer to the next paragraph. अगर कंपनी फेल हो जाती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करने के लिए कुछ अमाउंट
चैरिटेबल फंड में देना या कुछ सोसाइटी के लिए करना था पर वो कर नहीं पाए तो उसको रीज़न देना पड़ेगा कंपनी को। ट्रांसफर सच unspent amount fund specify scheme. Seventh, within the period of 6 months of the expiry of the financial year. Also, if the company spend amount in excess of the requirement, such company may set off such excess amount again the requirement to spend for such member of speed succeeding financial year and in such manner as may be prescribed. Any amount remaining unspent pursuant of any ongoing project fulfill such conditions as may be prescribed. Undertaken by company pursuing of its corporate social responsibility policy shall be transferred by the company within a period of 30 days from the end of the financial year to the special account of the operate by the company in that behalf of the financial year scheduled bank to be called unspec corporate social responsibility account. Such amount shall be spent by the company in pursuance of its obligation toward the corporate social responsibility policy within a period of 3 financial years from date of such transfer, following which the company shall transfer the same to a fund specified Schedule 7 within the period of 30 days from the date of completion of the financial year. बिजनेस इथिक्स होता है, कुछ इथिक्स फॉलो करने पड़ते हैं कंपनी को। Business ethics is nothing but application of ethics in business. Business ethics is nothing but application of ethics in business. Business ethics को अप्लाई करना पड़ता है बिजनेस में। Business ethics is application of general ethics idea of business behavior. उसमें बताया गया है कि बिजनेस बिहेवियर कैसा होना चाहिए। उसमें बताया गया है कि बिजनेस का जो भी बिहेवियर है वो कैसा होना चाहिए। Ethical business behavior facilitate and prompt good to society, improve profitability, foster business relation, and employee productivity. The concept of business ethics has come to mean various things to various people, but generally coming to know what what is right or wrong in the workplace and doing what is right. This regard to the effect of product, service, and in the relationship with stakeholder. बिजनेस एथिक्स में ये बताया गया है कि बिजनेस के रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ अच्छे होना चाहिए, बिहेवियर कैसा होना चाहिए, अपना अच्छा बिहेवियर होना चाहिए, बताया गया है। थैंक यू।